Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic we are going to start today is pesticides. Preferably, the pesticides I'm going to describe more in detail are herbal pesticides, which can be used as pesticides and which are, we can say, as safe pesticides for not only for plants but for human health as well. पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं? सबसे पहले ये देखते हैं पेस्ट क्या होता है. पेस्ट इज एनी एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज ट्रबल, इंजरीज या इकोनॉमिक डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू प्लांट्स या क्रॉप्स. क्रॉप्स और प्लांट्स को जो भी इकोनॉमिकल डैमेज प्रोवाइड करता है ना, उसको पेस्ट कहते हैं उर्फे आम में. अच्छा, पेस्ट जो होते हैं, certain times ऐसा भी होता है कि they don't create any economic damage to it. Sometimes they are जो है ना, not pests बल्कि insects, but those insects, those which are dangerous for plant, they are called as pests. The common pests include insects, bacteria, fungi, rats, that is dead rodents, and weeds. What are pesticides? A pesticide is any toxic substance used to kill animal or plants that causes economic damage to crop or ornamental plants. वो toxic substance जो कि animals को kill करने में जो है वो मदद करता है ताकि plants के ऊपर जो damage cause हो रहा है वो ना हो सके. अच्छा, ये दोनों तरह के plants हो सकते हैं. ये वो भी हो सकता है crop जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ये या ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर रहे हैं, या ये ऑर्नामेंटल पर्पस वाले प्लांट्स भी हो सकते हैं. बोथ टाइप के लिए जो भी यूज होता है कंपाउंड या सब्सटेंस, वो पेस्टिसाइड कहलाता है. Methods of pest control. There are two methods available for the control of pests. Number one is a natural control and the second one is the artificial control. What is natural control? Topographical influence of the seasons, changes, changing temperature. जो जितने भी topographical influences है, means उस topography means उस area का particular temperature, उस area के particular जो है उसकी जो changing environment है, उसको जो है वो topographical influence कहते हैं. This is rainfall, soil, atmospheric humidity, and other natural factors also show their effect on insects and their hosts. What is artificial control then? Artificial, of course, artificially controlled by men. Artificial control of pests have been developed by men. These methods can be categorized as mechanical, agricultural, chemical, and biological methods. Mechanical control कैसे होता है? By using manual labor as well as mechanical devices for collection or destruction of pests like hand picking, burning, trapping, and employed for the destruction of eggs, larvae, and adult insects. मैकेनिकल कंट्रोल में जो है हैंड पिक करके भी आप जो है वो ले सकते हैं. समटाइम्स यू हैव टू बर्न द क्रॉप, या बर्निंग करनी पड़ती है आपको. इन सब को जो है वो मैकेनिकल कंट्रोल में आते हैं. जबकि एग्रीकल्चरल कंट्रोल क्या है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड. इट इंक्लूड्स डीप प्लोइंग एंड एराडिकेशन ऑफ वीड्स एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट्स. जब आप किसी एरिया को जब आपको क्रॉप प्रोड्यूस करनी होती है, आप उससे पहले उसको एक तरह से प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ दैट सॉइल. तो उस वक्त आप जो है ये क्या करते हैं, और पुराने ज़माने में क्या किया जाता था, क्योंकि ओल्ड वीड्स के अंदर ना ये ज़्यादा जो है वो डेवलप होती थी चीज़ें, तो उसको जो है इरेडिकेट करने के लिए बहुत डीप खुदाई करके प्लोइंग जो की जाती थी वो डीप की जाती थी, और नीचे से भी जो थोड़े बहुत अर्ली स्टेजेस के जो इंसेक्ट्स होते थे वो निकाल लिए जाते थे. और समटाइम्स जो वीड्स ग्रो कर रहे होते हैं ना, जो कि हार्मफुल होते हैं या उसके लिए, तो वो उसको निकाल दिया जाता था. अल्टरनेटिव क्रॉप रोटेशन और ऑफ चेंजिंग environmental conditions or some methods which lead to obstruction of the life cycle of pest. ऐसा भी होता है कि एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप ऐसी लगाई जाती है कि उसको जो देखिए, आप उसको एक टाइम चाहिए ना प्रिवेल करने के लिए, उसको ग्रोथ में रखने के लिए या उसको प्रिवेल करने के लिए, तो उसको तोड़ा जाता है, उसके लाइफ साइकिल को तोड़ा जाता है.
by introducing different crops at different time periods, तो उससे भी जो है कंट्रोल होते हैं काफ़ी हद तक pests. Then आता है chemical control. Chemical agents are used for killing pests or for protecting crops, animals, or other properties against the attack of the pest, like DDT, BHC, Eldarin, and Endrin. ये सब चीज़ें जो है वो chemical control के अंदर यूज़ की जाती हैं. Then आता है biological control. Biological control by using plant or animal material for controlling many harmful pests. आप बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर प्लांट इटसेल्फ या एनिमल मटेरियल को यूज करते हैं पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए. इसमें लाइक इंसेक्ट हार्मोन्स जैसे एक्डासोन्स एंड जुवेनिलिन ये जो है इसमें यूज होता है. इंसेक्ट्स आर ईटन बाय बर्ड्स, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आता है. Classification of pesticides. Pesticides are classified according to the pest they control, that is insecticides, ants, moths, cockroaches, herbicides, weeds, fungicides control fungal disease, rodenticides जो है वो rats को control करता है. Mechanism of action of pesticides, broad categories. Stomach poison, number one इसका method है stomach poisons. Kill by being taken into stomach, absorb in the blood, and leads to the death of pest due to the toxic action. While the contact insecticides kill by direct or indirect contact with the insects, or sometimes it penetrates inside the body and causes oxidation and suffocation of the insects. दो तरह के हो गए. पहला हो गया stomach poison जो कि आपका they kill by being taken into stomach के अंदर जाके absorb होता है, then वो जो है वो lead करता है to the death. While there is another which is contact uh, insecticide, वो जो है उसको they causes oxidation and suffocate the insects. Number third is fumigants. They can be applied only in enclosed areas where it surrounds the insects, enter their breathing pores, and kills. The fumigants can be applied only in enclosed areas where it surrounds the insects, enter their breathing pores, and kills. Fumigants यूजुअली यूज किए जाते हैं ऐसे एरियाज में जो कि एनक्लोज्ड हों, बंद हों, ठीक है, और इट सराउंड्स द इंसेक्ट्स एंड एंटर्स देयर ब्रीदिंग पोर्स और उनको किल कर देते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस? दे आर चीप, that is they are economical. Pesticides are cheap, they are less harmful to the human beings and more effective against pests. They are more stable and can be kept for prolonged period. They can be used to control the carriers of vector-borne disease like malarial, sleeping sickness, and dengue fever. Disadvantages: the onset of action is slow. The quality of pesticides required may be more due to crude components. Okay, जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं उनकी एग्जांपल्स जो है वो है पायरेथ्रम फ्लावर, नंबर वन. Next is neem leaves and neem oil, tobacco leaves, tobacco oil, Nux vomica seeds, sabadilla seeds, Rihanna root and stem, Daris root and rhizome. ये सब पेस्टिसाइड जो है वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स के अंदर आते हैं. नंबर वन इज पायरेथ्रम. पायरेथ्रम का सिनोनिम जो है वो उसको नेचुरल पायरेथ्रम भी कहा जाता है, इंसेक्ट फ्लावर्स भी कहा जाता है. Biological source इसका पायरेथ्रम consists of more or less fully expanded flower heads of Chrysanthemum cyanifolium. फैमिली इसकी कंपोजिटी है, और आपको पता है कंपोजिटी फैमिली क्या होती है, उसके खास अंदाज होता है, खास उसके अंदर बात क्या होती है कि इसकी जो फ्लावर अरेंजमेंट होती है ना उसकी वजह से उसको कंपोजिटी कहते हैं. इनके फ्लावर्स इकट्ठा होते हैं, एक जगह होते हैं. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका क्या है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पायरेथ्रीन which are organic esters, chemicals made up of carboxylic acid and keto alcohols. The main constituents are pyrethrin 1 and 2. It also contains cyanidine 1 and 2, jasmine 1 and 2.
The IP standards for pyrethrin is that the pyrethrin should contain not more than 5% of naturally adhering stem. उसके साथ आती है वो 5 not more than 5% होना चाहिए, ash not more than 8%, and acid insoluble ash not more than 1%. Uses इसके use as an insecticide, contact poison के तौर पे भी use होता है. It paralyzes in short time. Use in the form of wettable powder, emulsion concentrate, kerosene solution. 20% ऑफ पायरेथ्रीन्स के जो केरोसिन सोल्यूशन है उसके अंदर 20% जो है आपको डालना होता है पायरेथ्रीन्स जो है. Many a times, pyrethrin extract is mixed with other insecticides like DDT or sulfoxides, which increases the action of pyrethrum. Other varieties are Chrysanthemum coccineum and Chrysanthemum marcali. Next is tobacco. सिनोनिम इसको तंबाकू भी कहा जाता है. बायोलॉजिकल सोर्स इसकी टोबैको कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ निकोशियाना टोबैकम एंड निकोशियाना रस्टिका. फैमिली इसकी सोलिनेसी है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इट कंटेन्स पायरिडीन अल्कलॉइड्स. पायरिडीन अल्कलॉइड्स भी काफ़ी टॉक्सिक अल्कलॉइड्स है. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज निकोटीन, निकोटाइरीन, निकोटामीन, एनाबिसिन एंड एनाटाबीन. It also contains carbohydrates, sucrose, starch, pectin, cellulose, lignins, and pentoses. Uses other ये एक common use है कि ये sedative, antispasmodic, veterinary, antihelminthic के तौर पे useful in smoking and agriculture insecticide, manufacture of nicotine, nicotinic acid, and nicotinamides. अच्छा इसको कैसे यूज करते हैं कि इफ़ यू कैन अगर इसको गार्डन की उसके लिए भी यूज़ किया जाता है टोबैको को कि गार्डन पेस्टिसाइड्स के तौर पे भी. तो उस पर क्या करते हैं अगर आपके पास रूम है और आपके पास जगह है तो यू कैन ग्रो टोबैको प्लांट और वो इटसेल्फ जो है वो सॉइल के लिए और इन्वायरमेंट के लिए प्रोड्यूस करता है. अदरवाइज क्या करते हैं कि ये जो इसके पत्ते हैं ना इसको टोबैको लीव्स को इनको अंडर प्रेशर जो है ना वो उसको जलाया जाता है और ऑयल प्रोड्यूस होता है. इससे वो जो ऑयल होता है ना वो पेस्टिसाइड होता है. इसके अलावा भी देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. इसमें ये जो मोलस्क्स होते हैं ना इनके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव होता है. और जो है देयर आर अदर वेज कि जिसमें जो है ना इसको यूज़ किया जाता है. बेसिकली जो निकोटीन है ना बेसिकली वो जो है उसके अंदर ये जो है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है. ओके नेक्स्ट इज नीम. नीम का मैंने इस वक्त पौधा नहीं दिखाया बिकॉज नीम ट्री आप सब जानते हैं कि नीम कैसा होता है. सिनोनिम इसका नीम ही है. बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश लीव्स ऑफ द प्लांट नोन एज अ डायरेक्टा इंडिका. फैमिली मेलिएसी. Chemical constituent contains bitter principle, nimbutyne, complex liminoid compounds named as a directine, malatrol, and selenin, etc. Uses the bark of the neem tree is good bitter tonic. आप ये हम सबको पता है कि as such कैसे use होता है. Used in malarial fever and skin diseases. Used as an insecticide repellent. Insecticide, nematocidine and antimicrobial properties. Seed oil possess spermicidal activity. नीम itself नीम ट्री इसीलिए जो है ना पहले ज़माने में नीम ट्री को ज़रूर जो है वो क्रॉप्स के अराउंड या ऐसे उगाया जाता था क्योंकि इटसेल्फ इसका पत्ता या इसकी मौजूदगी ही जो है वो रिपेलेंट होती है बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स को जो कि जैसे फ्लाई टाइप चीज़ें होती है ना उसके लिए. नेक्स्ट इज डेरिस. It consists of dried root and rhizome of Daris elliptica and Daris melissanis, family Leguminosae. Chemical constituents, it contains isoflavonoid derivatives, rotenone, and tefuron, and toxicarol, and degnaline. लेग्यूमिनेसी मीन्स कि इसके जो रूट है वो या वो राइजोम है ये जो है क्रिएट करते हैं नोड्यूल्स और ये जो है उसके अंदर जो है ये कंपाउंड्स
प्रेजेंट होते हैं. यूजेस इसका नंबर वन इज कॉन्टैक्ट पॉइजन के तौर पे भी यूज होता है, एंड यूज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे और किलिंग वेजिटेबल इंसेक्ट्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम सच एज लीफ हॉपर को किल करने में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज नेक्स वोमिका. नेक्स वोमिका आपको पता ही है, आपने इस लैब में काफी दफा पढ़ा है. बायोलॉजिकल ओरिजिन इसका नेक्स वोमिका कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स. किसका? स्ट्रिक्नस नेक्स वोमिका का, फैमिली लोगेनेसी. It contains not less than 1.2% of strychnine. Active constituents, it contains about 1 to 5% of bitter alkaloids, indole alkaloid. The chief constituents of alkaloids are strychnine, brucine, bomycin, pseudo-strychnine, glycoside, monoterpene glycosides, loganin, fixed oil, which is about 2 to 4%. Uses spinal cord stimulant है वैसे in case of asthenia, excessive fatigue of neurotonic region as a circulating stimulant, nerve and sex tonic, bitter stomach, strengthening of stomach and promoting its action. लेकिन ये